Hello guys, welcome back to Analyst Adda. So today we are going to start a new chapter, new video, new topic. Okay. So first, imagine you are building a banking application. Okay, and customer logs in and click transfer money. Behind the scenes, money is deducted from one account and added to another account. But here is a question. What question? How does your Java application talk to database? How does that data actually get stored? What happens if the database connection fails? What if thousands users click at the same time? So today we are starting a complete database connectivity master series from basic concept to enterprise level architecture. So this is the first video. We will deeply understand first what is the foundation of database. So without writing a single line of code, we will understand. Okay, let's start. So first, before move to the database, first we will start database connectivity. So before the database connectivity, we will start the three-tier architecture. We must understand how modern applications are structured. Okay, so based on the three-tier architecture, most of the application follow something like this, the three-tier architecture. So first we will understand this. So mhm. So I'm just creating this structure first for you. Okay, sorry. So what is the three-tier architecture basically? This is client. Okay. This is application server, and third is the database layer. Okay. I hope you understood this thing. This is the three-tier architecture. I'm just explaining you. If you have any doubt, please write in the comment box. So I will explain in between also or end of the class. Okay, so you need to connect. Okay, might be the lines is not properly drawing. So okay, I hope you understood. This is the client. This is the first layer. The second layer is the application server, and the third layer is the database layer, right? So what client layer can be, right? So client layer can be a browser like Chrome, okay, the mobile application, or any front-end applications which is built in the React, Angular, HTML. Okay, so this is the client. Okay,
The client sends a request, for example, the login request, the transfer money request, the fetch order history request. But here is something very important. Client never talk directly to database. Client never talk directly to database. So this is a label. Sorry. Mm, give me a moment. If I This is a client, if I directly talk to database, this is wrong, right? This is wrong. Client always talk to first application layer and application server talk to database layer. Okay, client never talks directly to database layer. Why? Because that would be a massive security risk. Okay, so if the browser could directly access the database, anyone could manipulate the data. So I hope you understood this line. Client directly never directly talk to database layer. What is the application server? What is the application layer? Now we move to the application layers. So this is the application layer. Basically, we can build in the Java, Spring Boot, Node.js, .NET, because this layer is the brain of system. This is most powerful. Okay, it handles the business logic, validation logic, authentication, authorization, and most importantly, what is database communication. Because we created in between, client talk to application layer communicate to database. So the application server acts as a bridge between the user and the database, between the client and the database. The database does not know who is the user. Database does not know who is the user. Okay, it only know the application server. Yeah, we are creative. We have the application server, application layer. Okay, but here is the user. Here is user. Any of the user is browsing this application. Okay, but application server does not know who is the user. Might be the browsing, might be the http direct endpoint. Okay, access this client. So database does not know who is the user. It only know the application server, right? Database does not know client, right? Database know the application directly, the application server. And let's discuss with the database. So we have the database layer. So it could be the MySQL database, PostgreSQL, or Oracle, or any of the database. So what does database? Database basically store permanently, that right, ensure the consistency, handles transaction, maintains indexes. So but these are the specialization of the database where we maintain the data are. Okay, but the database never directly interact with the user. डेटाबेस कभी भी यूजर से डायरेक्टली इंटैक्ट नहीं करेगा, राइट? किससे इंटैक्ट करेगा? एप्लीकेशन से. सो इट ओनली कम्युनिकेट विद द एप्लीकेशन सर्वर. So here the big question becomes, how does the application server talk to database? Correct? Database never talk to client. Database talk to application server directly. But how could it be possible? How application server talk to database? This is a main curious question, right? So we will use the connectivity, right, in between application server to database layer. We will use the connectivity, which is called the database connectivity. So what is database connectivity? Database connectivity is basically a mechanism through which an application establishes communication with a database. Or we can say in simple word,
database connectivity means establishing a secure, controlled, reliable communication channel between our application and database to execute queries and manage transaction. So in between we have the connection, right? Mm, sorry. Or we can directly, basically this happens, right? In between the application server and the database layer have one thing, connection. Okay, so I hope you understood this thing. What is the database connectivity, right? This is the connection. This is the database connectivity connections. Okay. Now let's break into the component. How the who what is the component, first component, second component, or how the application server connect to the database, which connections we need to require, right? First I will explain you one by one. Component first. Component first is basically a driver. Okay. First component is driver. So, driver is basically a software library that acts as a translator. Our Java application does not naturally understand MySQL protocol, right? So driver translate Java calls into a database specific protocol message. For example, if we use MySQL, if we using the database MySQL, then we need a MySQL driver. If we use the PostgreSQL, we need a PostgreSQL driver. So driver is basically, we can say that the translator, right? For example, let me explain you with the genuine example. Java speaks English, database speaks MySQL language. So driver acts as a translator between them to convert Java language to MySQL language. Suppose for example, we someone talk to in Hindi, someone talk to in English, and if in between someone who knows the both of the language, so if someone convert a language Hindi to English or English to Hindi, so this is the basically the component. First is the driver. So driver is basically the translator
who convert the Java to MySQL language. The second component is the connection, right? So second component is the connection is basically a session between our application and the database. तो सेकंड कंपोनेंट क्या होगा, कनेक्शन होगा. कनेक्शन क्या कर रहा है, एक सेशन क्रिएट करेगा हमारी एप्लीकेशन और डेटाबेस के बीच में. It uses the network protocol like the TCP, IP, TCP, IP, right? This is the session. So when our application wants to execute a query, it must first open a connection. So we can think of it like making a phone call. If the phone call is not established, communication cannot happen. So every database interaction require a connection. So we can say the connection is equal to session. Connection is session. Okay. The third component is query. Okay. So third component is query. The query is simply an SQL command, like the select, insert, update, delete. These are the SQL command. So, remember something very important. Query is not connectivity. Okay, query is not connectivity. Connectivity allows query execution. So without connectivity, query cannot be executed. So first is the driver, second is the connection. So without connection, query will not be executed. Okay, so first we need to create a connection. After that, we can execute the query. So query is the SQL command. Okay. Query is SQL command. Okay. The fourth component is transaction. Component 4 is transaction. Okay. uh, Transaction. So transaction is basically a groups groups to multiple operations into a single logical unit. For example, when transferring money, so first step would be deduct amount from account A, right? And the second step would be add to account B, right? So suppose, let me explain you. Suppose this is A, right? This is A and this is B. This is A, this is B. So
First is the A sends the some amount, right, to B. तो जब भी ए से डिडक्ट हुआ है अमाउंट, कोई भी अमाउंट डिडक्ट हुआ है बी पर, तो तब तक बी के पास नहीं पहुंचेगा, राइट. बोथ ऑपरेशन मस्ट बी सक्सीड. ए से बी तक और बी से सी, बी ए ने सेंड कर दिए, ऐसा नहीं हुआ कि कनेक्शन बीच में ही एंड हो गया, यहीं पर है, अभी बी तक नहीं पहुंचा है, राइट. So both operation must be succeed. Once we any of the amount is deducted from account A, then definitely it will receive to account B. So both operation must succeed. If one fail, suppose if A sent amount but B did not receive, so if one fail, the entire operation must roll back. So this is where we use the asset of properties comes into the picture here. So let me explain you. Asset, what is asset here? A is the atomicity, B is the consistency, I is the isolation, and D is the durability. So basically acid comes into the picture here. Why? Because we need to follow the acid property. So database connectivity must support the transactions reliable. Otherwise, the financial systems would collapse. Okay. So we need to adhere to acid properties while any of the database connectivity must support the transaction reliable. That's why we need to follow the acid property. So this is the basic things. Okay, we we should know what is three tier architecture, how application, how clients talk to the database server, how application talk to the database layer. So what is the components we need to use while creating the connections. Okay, what is asset properties and why we use asset properties. Now let's move from theory to real production system. Suppose uh, suppose this is where many applications fail, right. In the production, a real production, we create the small application, we can create, never fail. But in the real production system, many applications fails. So why fail, right? We are using the each and everything, each steps we are following, still our application fail. Why? Because what if connections fail? Let me explain you step by step. Suppose if the database goes down, if there is a network issue, if credentials are wrong, the application cannot communicate with the database. If users start seeing the 500 errors, transactions fail, right, business operations stop. So in enterprise applications, in enterprise systems, database connectivity failure can bring the entire organization to a halt. Okay, I hope you understood this thing. Why, what is connection fails? Suppose what is database is slow, then what happened? If database slow, what happened? If database slow, then if queries are poorly written, we have already written the poor query, that's why our database slow. If indexes are missing, if there is a heavy load, the database becomes slow. When database is slow but application threads block, when threads block, response times increases. When response time increases, users get frustrated. So eventually the entire system performance degrades, right.
And the next, what if suppose the thousands of connections open, then database have limited connections capacity basically. So if every request create a new connection and connections are not reused, very soon the database will reach its maximum connections limit. So after that no new user can connect, so the system crashes, right? This is why connection pooling exists, which we will study in the upcoming video, what is connection pooling and how we can use in our applications. And the next is why application failing is basically the main point is the memory leaks. But why? If connections are not properly closed, then memory leaks. They remain open in memory. Resources get exhausted, application stop responding. So enterprise systems fail more often due to resource mismanagement than coding mistake, right? If we do not management properly, then we have written each and everything properly in coding, but we need to require the properly manage our applications, right? So these are the main points why our enterprise application in real productions problem we face in real applications, right? So these are the problems I explain you. And okay, let me explain some interview questions. Okay, so basically the most interview focused question is the what is database connectivity. I explain you. So the database connectivity is the process through which an application establishes a communication channel with a database using a driver and connection to execute SQL query and manage transaction securely. आपको समझ आ गया होगा डेटाबेस कनेक्टिविटी क्या है। ये डेटाबेस कनेक्टिविटी है, कनेक्शन क्या था, एक प्रोसेस है जिसमें हम एप्लीकेशन को क्या कर रहे हैं, स्टैब्लिश कर रहे हैं कम्युनिकेशन चैनल में विद अ डेटाबेस। किसके साथ? विद अ डेटाबेस। ये हमारा एप्लीकेशन सर्वर है, उसके साथ हम क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं डेटाबेस को। किसके थ्रू? यूजिंग अ ड्राइवर एंड कनेक्शन। यूजिंग अ ड्राइवर, ये कंपोनेंट्स आपको एक्सप्लेन किए थे किसके थ्रू, यूजिंग अ ड्राइवर एंड कनेक्शन। टू इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ड्राइवर एंड कनेक्शन। बट क्वेरी का यूज क्या है, क्वेरी को हम क्या करेंगे, टू एग्जीक्यूट करेंगे। कहाँ पर? एसक्यूएल क्वेरी के लिए हम उसको क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे और ट्रांजेक्शन को क्या करेंगे, मैनेज करेंगे, राइट? तो आपको ये चारों जो कंपोनेंट हैं वो क्यों यूज हो रहे हैं, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। इसको हम डेटाबेस कनेक्टिविटी में कैसे एक्सप्लेन करेंगे, राइट? अब अगर मैं नॉर्मली अगर आपसे पूछती हूँ कि व्हाट इज ड्राइवर, ये क्वेश्चन इंटरव्यू में बहुत पूछा जाता है कि क्या है ड्राइवर, क्या है। तो ड्राइवर इज बेसिकली अ सॉफ्टवेयर कंपोनेंट दैट ट्रांसलेट एप्लीकेशन कॉल्स इनटू डेटाबेस स्पेसिफिक प्रोटोकॉल फॉर कम्युनिकेशन। जैसे मैंने आपको बताया, आपको लेमन लैंग्वेज में बताया था, जावा है, जावा अंडरस्टूड, जावा को समझ नहीं आता है डेटाबेस का लैंग्वेज, और डेटाबेस को समझ नहीं आता जावा लैंग्वेज, राइट? तो एक ट्रांसलेटर है बीच में जो जो कोडिंग लैंग्वेज जो कन्वर्ट करेगा जावा लैंग्वेज। जावा क्या अंडरस्टैंड करती है? इंग्लिश, राइट? तो उसको 0 1 के 0 1 के फॉर्म में क्या करेगा, वो कन्वर्ट करेगा, जिससे क्या होगा, डेटाबेस जो लेयर है वो उसको अंडरस्टूड करें, तो सिस्टम लैंग्वेज बोल सकते हैं, राइट? तो आपको समझ आ गया कि ड्राइवर क्या है। नेक्स्ट, अगर मैंने आपको कनेक्शंस के बताया, कनेक्शन इज बेसिकली अ सेशन है, बट व्हाट हैपेंस व्हेन कनेक्शन फेल। जब हम ड्राइवर है और हमने कनेक्शन क्रिएट किया एप्लीकेशन सर्वर से डेटाबेस लेयर पर अगर वो कनेक्शन फेल हो जाए तो क्या प्रॉब्लम होगा? तो द एप्लीकेशन कैन नॉट एक्सेस द डेटाबेस, लीडिंग टू रिक्वेस्ट फेलियर, ट्रांजेक्शन रोल बैक एंड पोटेंशियल सिस्टम डाउन। पूरा सिस्टम क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा अगर कनेक्शन फेल हो जाता है। एप्लीकेशन सेंड कर रही है, एक्सेस करना चाह रही है डेटाबेस को, और डेटाबेस फेल हो रहा है, तो क्या होगा, दोबारा से रोल बैक करेगी। जैसे मैंने आपको ये एग्जांपल बताया था, यहाँ कनेक्शन ही यूज हुआ है ना यहाँ पर, कि ए रिक्वेस्ट बी को सेंड कर रही है डेटाबेस, बी को कोई रिक्वेस्ट सेंड कर रही है। जैसे उसने एक फाइनेंशियल टर्म्स में मैंने बताया कि ए सेंड कर रहा है बी को
अमाउंट, कुछ अमाउंट, बट बी को रिसीव नहीं हुआ है, तो क्या होगा, रोल बैक्स होगा। तो इस केस में क्या होगा, सिस्टम डाउन टाउन में चला जाएगा, राइट। डाउन टाइम रहेगा कि उसमें उसको रोल बैक करना पड़ेगा, दोबारा से भेजना पड़ेगा, बट यहाँ पे उसको कंप्लीट नहीं माना जाएगा जब तक ए से बी पर, ए जब उसका एक्नोलेजमेंट नहीं आ जाता है, बी को भी रिसीव नहीं हो जाता है, तब तक उसको कंप्लीट नहीं माना जाएगा कनेक्शन, राइट। अगर व्हाट इज कनेक्शन पूलिंग, जैसे मैंने आपको बताया था कि कनेक्शन पूलिंग क्या होता है, तो कनेक्शन पूलिंग इज अ टेक्निक वेयर अ फिक्स्ड नंबर ऑफ डेटाबेस कनेक्शंस आर क्रिएटेड एंड रीयूज्ड टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस एंड प्रिवेंट रिसोर्स एग्जॉर्शन। जैसे अगर कोई रिसोर्स को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वो डिप्लीट हो रहा है, राइट, तो हम कनेक्शन पूलिंग जो टेक्निक होगा ना, उसमें फिक्स नंबर ऑफ डेटाबेस कनेक्शंस हमने क्रिएट कर रखे हैं और उसको हम यूज कर सकते हैं। किसके लिए, अगर कोई रिसोर्स को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो उसको इम्प्रूव, उसकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, कनेक्शन पूलिंग को यूज करेंगे। आगे हम प्रैक्टिकल जब क्लास में हम इसको एग्जांपल्स के थ्रू भी मैं आपको बताऊंगी कि कैसे अपना प्रैक्टिकल एग्जांपल्स करेंगे। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछा जाता है इंटरव्यू में कि व्हाई इज डेटाबेस परफॉर्मेंस क्रिटिकल। ऐसा कोई रिक्वायरमेंट है कि क्यों ज़रूरत है और क्यों ज़रूरत है। यस, इट इज़ रिक्वायर्ड है। डेटाबेस का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत क्रिटिकल है, मतलब क्रिटिकल अगर है तो बहुत क्रिटिकल है। क्यों है, क्योंकि बिकॉज ऑलमोस्ट एवरी यूजर रिक्वेस्ट interact with the database. If the database is slow, the entire system becomes slow. सपोज थाउजेंड्स ऑफ रिक्वेस्ट हैं, वो डेटाबेस को कनेक्ट कर रहे हैं, और अगर वो डेटाबेस को कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, अगर डेटाबेस का परफॉर्मेंस प्रॉपर नहीं है, उसको टाइम लग रहा है उसको एक्सेस करने के लिए या कनेक्ट करने के लिए, तो क्या होगा, एंटायर सिस्टम क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, राइट। आई होप आपको ये समझ आया होगा, मैंने जो समझाया। सो ये कंसेप्चुअल जो फंडामेंटल था वो हमें स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, राइट। सो आई ट्राई टू अंडरस्टैंड माई बेस्ट कि आपको पहले जो फंडामेंटल है वो आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। उसके बाद हम आगे क्लास में जब प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको जो मैं आपको प्रैक्टिकल कराना चाहूँगी वो आपको समझ आएगा प्रॉपरली। तो in this class we understood the three tier architecture, right. We learn what is driver, what is connection, what is query, what is transaction, how transaction work. So in the next video we will move from theory to implementation. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रियल जावा कोड यूज करेंगे, यूजिंग जेडीबीसी के लिए एस्टैब्लिश करेंगे लाइव डेटाबेस कनेक्टेड कनेक्शंस स्टेप बाय स्टेप में, राइट। सो इफ़ यू वांट टू मास्टर backend development, database connectivity is not optional, right. You understood first, इट इज़ इसेंशियल, राइट। हम इसको स्किप नहीं कर सकते। अगर आपको बैकएंड डेवलपमेंट में जाना है, आपको जावा आता है, आप कोड लिख लेते हो, बट डेटाबेस कनेक्टिविटी नहीं कर पाते हो, तो सब पॉसिबल नहीं है। आपको मास्टर बैकएंड डेवलपमेंट में जाना है, मास्टर बनना है बैकएंड डेवलपमेंट का, तो डेटाबेस कनेक्टिविटी इज़ इसेंशियल, नॉट ऑप्शनल, ओके। तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, रियल जावा कोड यूज़ करेंगे और जेडीबीसी को यूज़ करते हुए एस्टैब्लिश करेंगे कनेक्शन को, लाइव डेटाबेस कनेक्शन को, और सीखेंगे कैसे कनेक्शन करते हैं, कैसे कनेक्टिविटी करते हैं, कैसे एक्सेस करते हैं, सारा हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप you understood the architectures, you understood the fundamentals, okay. Thank you very much.